Hello, good morning. Welcome to Live. I'm Sohini Patel from the Kanan International Private Limited Head Office, Baroda. Before starting today's live session, I would like to give you an insight about Kanan International. We are India's premier visa consultancy services, catering to sending students across to UK, USA, Canada, Australia, to name a few. We've been into this business since the past 24 years. We are also into coaching since the past 20 years. We are coming up with blended learning platforms for send abroad tests, for example, IELTS, SAT, GRE, GMAT, TOEFL, etc. We want to provide platforms for students to study abroad. Today's live session is about a day in the life of a student in the UK. Before I begin today's live session, I would like to let you know that there is no typical day in a student's life. Every day is different for a student. Every day is different, especially when you're studying abroad. And when you're talking about UK, every day, हर दिन अलग होता है. When we talk about a particular day in the life of a student in the UK, if you're a chemistry student, आपका first day बहुत different होगा from a pharmacy student. हम basically टिपिकल डे की जगह फर्स्ट डे ऑफ योर स्टूडेंट लाइफ के बारे में आज बात करेंगे. हाउ इज योर फर्स्ट डे, व्हाट आर द एक्सपीरियंसेस दैट यू गो थ्रू आउट योर डे व्हेन यू आर न्यू इन अ कंट्री. जब आप एक कंट्री में बहुत नए होते हैं, कैसे पूरा दिन आपका गुजरता है, एंड हाउ एंड व्हाट ऑल डू यू डू इन योर एंटायर डे. I am a London graduate myself, and I would like you to go. I would like to give you a taster about a normal day in a student's life. As I said earlier, एक बहुत कॉमन थिंग होती है कि देर इज़ नो टिपिकल डे. एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट का पहला दिन वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ थर्ड ईयर का स्टूडेंट. एवरी डे इज़ डिफरेंट, बट एक ब्रीफ टेस्टर मैं आपको देना चाहूँगी जो किसी प्रोस्पेक्टस, किसी ब्रोशर में अवेलेबल नहीं होगा. सबसे पहले एज अ स्टूडेंट इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल कि आप जल्दी उठे, वेक अप अर्ली, प्लान योर डे इन सच अ वे दैट यू हैव एम्पल टाइम फॉर योर सेल्फ सो दैट यू कैन प्लान योर डेज एक्टिविटीज in a certain manner. Get up early. Breakfast is of course highly recommended because you have a very very stressful day. आपका दिन बहुत stressful, बहुत सारी चीज़ों के साथ होता है. So it is very essential कि आप breakfast भी करें. Now if you're residing in the campus, अगर आप campus में रह रहे हैं तो आपके लिए बहुत easy होता है the getting up and the getting dressed process. You can take your own sweet time to get ready. आप अपना खुद का आराम से टाइम लेके रेडी हो सकते हैं बिकॉज आपको प्रैक्टिकली अपने बेडरूम विंडो से ही आपकी लेक्चर बिल्डिंग दिखती है. यू कैन प्रैक्टिकली माइनस ऑल द ट्रैवलिंग टाइम फ्रॉम योर यूजुअल मॉर्निंग. लेकिन अगर आप कैंपस के बाहर रहते हैं तो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप जल्दी तैयार हो. इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट आप यू गेट रेडी अहेड, typically ahead of time, ताकि you can get to your nearest bus or train station and you can reach your campus. Once you reach your campus, whether or not you're residing in the campus or not, अगर आप कैंपस के बाहर भी रह रहे हैं या अंदर भी रह रहे हैं, अगर जैसे ही आप कैंपस में पहुंचेंगे on the first day you will be hit with a lot of realism. आपको एकदम से स्ट्राइक होगा कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं. एंड जब यूनिवर्सिटी के बारे में वेबसाइट्स लिखती है कि हमारा अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट काउंट नियरली 10,000 है या नियरली थाउजेंड्स में है, ये सब कुछ सही लगने लगता है ऑन द फर्स्ट डे बिकॉज आप देखते हैं कि वहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स है. एवरीबडी इज वांटिंग टू लुक आउट फॉर देम सेल्फ. सब लोग अपने लेक्चर रूम्स ढूंढ रहे हैं. सब लोग अपने आपको अच्छे से सेटल इन करने की कोशिश कर रहे हैं. सो यू समहाउ थ्रू दैट कंजस्टेड मेस यू समहाउ फाइंड योर वे इनटू योर लेक्चर. एंड वंस यू एंटर योर लेक्चर हॉल और योर लेक्चर रूम, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट योर लेक्चर जर्नी. आपकी लेक्चर जर्नी की स्टार्ट तब होती है. ऑल्सो यूजुअली सारे लेक्चर्स के बीच में कभी 2, कभी 3, कभी 4 आवर्स का गैप होता है. देर आर गैप्स बिटवीन ईच लेक्चर. What do you do in these gaps? आप इन गैप्स में क्या करेंगे? इट इज़ वेरी बेनिफिशियल कि आप आइदर यू गो एंड ग्रैब अ बाइट ऑफ फूड, या तो जाके आप कुछ खाने के लिए अपने लिए ले लीजिए और गेट सम फ्रेश एयर. ऑल्सो स्नीक इन सम एक्स्ट्रा टाइम टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर योर नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर्ड होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम अपने लिए रख लीजिए. प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर नेक्स्ट क्लास. गेट योर रीडिंग सॉर्टेड.
और इसके अलावा आप बीच के ब्रेक्स में क्या कर सकते हैं, यू ऑलवेज हैव टाइम टू विजिट द लाइब्रेरी, बट सिर्फ लाइब्रेरी की चेयर पे स्लम्प्ड होके बैठने के लिए और टाइम किल करने के लिए लाइब्रेरी में बैठने की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं लगती है. इनफैक्ट मेक यूज़ ऑफ योर एक्स्ट्रा टाइम दैट इज़ गिवन टू यू. अगर आप कैंपस के बाहर रहते हैं और आपको अपने घर जाना है, इफ़ यू वांट टू गो बैक टू योर होम इन बिटवीन दीज लेक्चर, you can always do that. लेकिन in that case save yourself some money, save yourself some time, buy a travel pass. तो आपका commute to and fro from the home to the university becomes easier और रोज रोज आपको commute का cost ना bear करना पड़े. Also अगर back to back classes होती है तो what is important is that आप hydrated रहे, keep yourself extremely hydrated. As I mentioned earlier, always have a light snack ready with you. अपने पास always एक light snack रखिए so that you don't feel hungry, you don't feel thirsty. And back to back classes बहुत stressful हो सकती है. It can take a toll on your health, it can take a toll on your mental capacity. तो don't over stress yourself. Don't create a situation जहाँ पे आप unwell feel करने लगे. Make your study journey very exciting and fun, and the learning process should be something that you look forward to every day. Also once your classes are over, अब आपका lecture day खत्म हो गया, now what are you going to do? Usually universities lectures के end में meetings रखती है. They hold these meetings, they hold these most of their meetings, most of their student council meetings, ये सब कुछ शाम में रखा जाता है. They are usually arranged in the evening so that they don't clash with your lecture hours. क्यों अरेंज की जाती है ये मीटिंग? सो दैट इफ यूर अ न्यू स्टूडेंट, यू गेट अकस्टम टू द स्टूडेंट लाइफ, you meet more and more people, you get used to the university life, the university culture. It is like a multicultural meeting where you will meet lots of people, where you will get to mingle with them. ये मीटिंग्स बहुत असेंशियल होती है इफ़ यू आर ट्राइंग टू अनवाइंड, इफ़ यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू बस्ट योर स्ट्रेस बस्टर की तरह ये मीटिंग्स यूज हो सकती है. एंड आई माई सेल्फ एज एन एक्स स्टूडेंट फ्रॉम द लंडन यूनिवर्सिटी सजेस्ट कि यू शुड ऑलवेज गो अटेंड दीज मीटिंग्स. बहुत बेनिफिशियल होती है आपके लिए. One very interesting thing about travel, if you're wanting to travel to and fro from the university to your home, or vice versa, in between lectures, before lectures, after lectures, एक बहुत important thing ये भी है कि when you're wanting to commute, you can always hire bikes. When I say bikes, I mean cycles in our language. Hire schemes के द्वारा London में, UK में you can hire cycles. These cycles are available to you at a very nominal cost of £2 for 24 hours, जिसमें first 30 minutes of your riding time is free. You can always hire these cycles for your better commute if you're residing pretty close to your campus and आपको बार बार ट्रेन, बस, ये सब जर्नीज का स्ट्रेस का मनी नहीं बेयर करना है. You can always hire these bikes and they will serve your purpose. Docking stations होते हैं हर यूनिवर्सिटी में, outside the university हर जगह ample docking stations होते हैं for you to park your bikes and for you to be safe कि हाँ आपकी bikes are very safe. Also when we are talking about a general typical life of a student in the UK, हर city में in the UK there are lots of universities, हमें पता है concentration of universities बहुत ज़्यादा है UK में. लंदन सबसे बड़ा सिटी माना जाता है when it comes to experiencing student life. London is the big city. Maximum student life अगर experience करना है, so I suggest you should go to London. In fact, there are a lot of tourists who go to London and they experience student life. वो specially universities में जाते हैं to get a feeling or to get a hang of student life कैसी होती है. So London is obviously ideal for that, but also if you're residing in Oxford or Cambridge, or these are the kind of universities you're wanting to look at, these university towns are extremely historic. यहाँ बहुत peace and quiet होता है and they are very very ideal for you अगर you're wanting to study and make use of your free time for only studying. If we talk about London as the big city for student experience,
a lot of students are into culture, a lot of students are into tourism. How do you make use of this? How do you make use of this after your lecture days are over? What do you do in the evenings? In the evenings you can always go out, venture out. If you're into tourist attractions, you can always go visit the House of Parliament, the Big Ben, the London Eye, the House Guards Parade, and make sure you stick around for the changing of the guards. It will be very fun, and it will be like a learning experience for you. If you're into culture, there are lots of places for you to visit. You can go visit the Tate Modern, you can visit the British Film Institute, you can visit the National Theatre. You can also make full use of your extra time post your lectures and post your meetings in the evenings. Go visit the library, make use of the library. अगर आपको बाहर नहीं जाना है, say for instance you want to be in the university, you want to make use of your extra time by studying, go to the library. Library will have you can have access to the library 24/7. So make use of that. Go to the library, study in your extra hours. And when you get time on the weekends, once your lecture week is over, go visit towns nearby towns में आपको again they will be very historic, they will be very knowledgeable. All these towns in the UK have something about themselves. They have an historic relevance, they have an academic relevance, they are beautiful. Of course, scenery has to be one of the most important points when you're wanting to travel. So जब हम एक नॉर्मल UK स्टूडेंट की लाइफ को डिस्कस करते हैं, अ नॉर्मल डे, एज आई मैंशन, एक टिपिकल डे कुछ नहीं होता है, सबका डे अलग होता है. आप जिस फील्ड के स्टूडेंट हो, आपका डे उस हिसाब से कैरी फॉरवर्ड करेगा. अ यूजुअल डे will start with your lectures, will end with the meetings. Then you can obviously venture out or go to the library, and in the end you're so tired by the end of the day, or probably so content with what you've achieved in your entire day, that you will want to go home and rest. So that is all about a day in the life of a student in the UK. Now if you wish to have any questions, you can obviously reach out to us in our head office or on the numbers mentioned in the chat boxes. If there are any questions that you would like me to address, I am open to questions right now. Please feel free to ask your questions. Well, ma'am, we have one question from Vraj on YouTube, who is asking, how is the UK as a study destination? Hi Vraj. So as I mentioned, UK as a study destination is extremely exciting, it's fun, and at the same time the study will be intensive, but you will be able to complete your study in a shorter period of time. And मैंने अभी a day in the life of a student in the UK हाल ही में डिस्कस किया आपके साथ. So you will be able to get a hang of UK life as a student. बहुत इंटरेस्टिंग भी होती है, बहुत फन भी होती है, and at the same time you get to finish your course earlier, and the course की क्वालिटी कभी भी डिफर नहीं करेगी as compared to other countries. Well, Yash is asking on Facebook that what are the scope after studies in UK? So there is a lot of scope after studies in the UK. For example, whether you're a commerce student or you're a science student, there are variety of options available for you. One of the most important characteristics of studying in the UK is that course options बहुत ज़्यादा होते. There is an ample variety of course options available for you. तो आपको हर चीज़ के बारे में जाके पढ़ने का और हर चीज़ को समझने का मौका मिलेगा before you can go further with deciding your future prospects. Well, one user on Instagram is asking, do we have to give IELTS exam for UK? So hi, yeah. One of the major criteria for testing your proficiency in the UK is IELTS. IELTS is International English Language Testing System, and it is one of the most important factors if you're wanting to study or migrate to the UK. To know more about the English proficiency requirements and the visa requirements, you can always reach out to us. Come to our head office. We will be very happy to help you. Well, Vivek is asking on YouTube that which are some good destinations in UK to study further. Okay, hi Vivek. So the most popular cities to study in the UK would be London, would be Edinburgh, Glasgow,
Birmingham, Manchester, etc. These are extremely they are called as a hub of students. They are these university towns and cities that are only known because of their universities. Well, ma'am, one user is asking an interesting question. He's asking, after completing the studies, does US provide PR or citizenship in their country? US? Yes. Sorry, UK. Okay. Hi. So you're asking us about citizenship. Also, as I mentioned earlier, there are prerequisites proficiency tests for either studying or migrating to the UK. So if you're wanting to know more about these, you can reach out to us or you can call us and we'll be happy to help you. Well, ma'am, one user, Advani, he is asking, can you please share a rough academic timetable in UK? Okay, hi Advani. I just wanted to let you know that as I mentioned right now, एक typical day या एक typical timetable किसी के लिए नहीं होता in the UK. When you're studying in the UK, अगर आप एक commerce student है, आपका timetable बहुत अलग होगा as compared to अगर आप एक science student है. अगर आप economy या फार्मेसी मेजर करने जा रहे हैं, दोनों चीज़ों में आपका टाइम टेबल डिफर करेगा. एज आई मेंशन, या तो दो लेक्चर्स के बीच में 2 घंटे का ब्रेक होगा, कभी 4 घंटे का ब्रेक होगा, बट योर लेक्चर्स विल यूजुअली स्टार्ट इन द मॉर्निंग्स. इन सर्टेन केसेस देर आर आफ्टरनून लेक्चर्स, इन सर्टेन केसेस देर आर ऑल्सो इवनिंग लेक्चर्स. सो हर किसी का टाइम टेबल सेम नहीं होता, इट इज़ वेरी डिफरेंट. बट मैंने आपको एक बेसिक एंड रफ आइडिया दिया था कि क्लासेज और टाइम टेबल और बेसिक लाइफ का डे कैसा निकलता है फॉर अ स्टूडेंट इन द यूके. Well, ma'am, one user is asking, which universities accept Duolingo examinations in this pandemic situation? Okay. Hi. So we all know that during this pandemic times, in the times of COVID, सबसे ज़्यादा accepted exams in these times is Duolingo, and Duolingo is acceptable by a lot of universities in the UK as well. To know more about these universities, I would like you to contact any of us. Come to our head office in Baroda, and please feel free to leave your messages. Our counselors will get back to you regarding the same. Yeah. So Vraj Sai is asking, New Zealand is a good destination, provides PR in short time. So, can you please explain? Hi, so to know more about New Zealand, since this was a session especially designed for UK, to know more about the prospects for you in the New Zealand, please, as I mentioned earlier, feel free to contact our counselors. Our numbers will be given in the chat box, and we will always get back to you, and we'll be very happy to help you. Well, ma'am, no more new questions on any of the platform. I hope I was audible. I hope I was clear. I hope today's session was fun and interactive, and I was able to solve your questions. अगर आपको और भी कोई questions हो, please feel free to call us, to leave us messages. We will always get back to you. We are very happy to help you. Thank you so much.